Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about O levels paper chemistry paper 2 paper 2021. Choose from the following compound to answer the following questions. Each compound may be used once, more than once, or not at all. Part A has a molecule with only 11 atoms. तो आपको फाइंड करना है किस मॉलिक्यूल में खाली 11 एटम प्रेजेंट है. अगर आप पार्ट ए की बात करते हो दैट कंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एटम, जिसमें 9 एटम्स हैं. पार्ट बी में बच्चे आपके पास 4 कार्बन्स हैं और 2 4 6 8 हाइड्रोजन, सो देयर आर टोटल 12 एटम्स. In part C we have 3 and 1 4 atoms, then 5, then 6 7 8 9 10 and 11. So it contain 11 atoms. So option C is correct. In next part 2 is oxidized to form ethanoic acid. तो अच्छा आपका एथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है दैट्स इक्वल टू CH3CO O and H, mean it is your carboxylic acid, and we know that carboxylic acid are formed from alcohol. तो अच्छा आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो either by oxygen or by oxidizing agent to got carboxylic acid. So बच्चे oxidation of alcohol that gives you carbonic acid, but ethanoic acid में 2 कार्बन हैं, तो you need that alcohol in the given option that contain 2 कार्बन. तो बच्चे अल्कोहल की पहचान आपके पास OH होना लाजमी है. और let's see, in compound A OH is there, it is the alcohol and also contain 2 carbon as well. It means option A is correct. In part 3 is an isomer of butene. तो बच्चे ब्यूटीन इज एन अल्कीन, और बच्चा आप अल्कीन का फार्मूला पढ़ के आए थे जनरल दैट इक्वल टू CnH2n, एंड बच्चे ब्यूट स्टैंड फॉर 4. अगर आप एन को यहाँ पे 4 प्लेस करते हो योर फार्मूला शुड बी C4H8. नाउ वी सी दिस फार्मूला इज सिमिलर टू ऑप्शन ए. तो बच्चे आपका अल्कोहल है, इट इज नॉट डिस्कस बिकॉज O इज देयर. इन ऑप्शन बी देयर आर 4 कार्बन एटम्स and count hydrogens 2 4 6 and 8. It contains C4H8. It means option B is the isomer of butene having same chemical formula. In part 4 react with hydrogen in the presence of a catalyst to make an alkanes. बच्चे आपको अल्केन प्रिपेयर करना है. अल्केन contains single covalent bond that was formed from alkene. जब बच्चे आप अल्कीन में H2 ऐड करते हो योर आंसर इज अल्केन. दैट रिएक्शन वाज डिस्कस इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये बच्चे आपके अल्कीन का रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो वी शुड नीड डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स. इन द गिवन ऑप्शन द ऑप्शन डी दैट कंटेन डबल बॉन्ड दैट इज योर अल्कीन. तो बच्चे इसका आंसर आएगा डी बिकॉज डी इज द अल्कीन, और जब आप अल्कीन में H2 ऐड करोगे यू गॉट अल्केन दैट कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. In part 5 contain 4 different elements chemically combined. तो आपको चेक करना है इन कंपाउंड में किसके पास है 4 different atoms combine है to give the molecule. In option A look at that there are carbon, hydrogen and oxygen. It contain 3 atoms. Part B is a hydrocarbon that contain 2 atom only, carbon and hydrogen. यहाँ बचे 2 atoms हैं. Part C में carbon है, hydrogen है and oxygen are the different atoms 3. In part 4 hydrocarbon 2 atoms, carbon and hydrogen. Part E is again hydrocarbon, only 2 atoms are there. In part F there are 3 types of atom. Carbon है बच्चे आपका, oxygen है और hydrogen है. It contains 3 types of atoms. In part G again there are 3 types of atom. This is your carbon, oxygen and hydrogen. In part H look at that, nitrogen is there, carbon is there, O is there and H as well. That consists of 4 different types of atoms. So option H is correct. ये बच्चे आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का. पार्ट बी आइडेंटिफाई 2 कंपाउंड दैट हैव pH of less than 7 in aqueous solutions. तो बच्चे pH के हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हैं, ये आपको याद करने पड़ते हैं. इन द pH scale the value range from 1 to 14 at room temperature and middle point is 7. तो 7 stand for neutral solutions, और बच्चे 7 से onward 8 to 14
these solutions are basic in nature, and from 1 to 6 these solutions are acidic in nature. In the given question they are asked pH less than 7, it means we discuss about the acidic solutions. And in all the option organic compounds are given, and in organic chemistry carboxylic acid are acidic in nature that contain functional group COOH or CO2H. Look at the options. In option C it contain carboxylic acid, which is का carboxylic part है, and in option F it contain carboxylic functional group as well. So बच्चे your answers are H and F. H and F are the correct option. Now we discuss question number 2, and the question is oxygen, sulfur, selenium, beryllium and polonium are in group 4. State the percentage composition by volume of oxygen in dry air. तो बच्चे आपके एयर में major elements, this is your O2 that is 21% by volume, and nitrogen that is your 78% by volume, and other are the inert gases, carbon dioxide and water vapors. So oxygen percentage in air is 21%. Part B, state one large scale use of oxygen. तो बच्चे हमारे पास के different uses हैं oxygen के. For combustion purpose, that is used for industrial scale for steel making. आप स्टील मेकिंग में यूज करते हो ऑक्सीजन को फॉर कंबस्शन. इट इज आल्सो यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल की वेल्डिंग करना, कटिंग करना. वी यूज ऑक्सीजन विद इथाइलिन गैस और एसिटाइलिन गैस फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस. सेकेंड पार्ट सी बच्चे हमारे पास है 2 isotopes of polonium are given to you, 84-209 polonium and 84-210. Explain why both isotopes have same chemical properties. तो बच्चे chemical properties depends upon number of electrons in valence shell, number of electron in last shell or valence shell. तो बच्चे ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बाद बच्चे 84 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन इनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन द सेम. सो वी राइट ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. सो बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, और वी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल. नाउ सेकंड पार्ट, गिव वन डिफरेंस in atomic structure of these two isotopes. तो जब डिफरेंस फाइंड करना है तो as we know that in isotopes electrons equal to proton but not equal to neutrons. तो physical properties depends upon number of neutron. So we say due to different number of neutrons. आप न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हो? आप एटॉमिक मैस में से माइनस करते हो एटॉमिक नंबर, तो इट कंटेन 125 न्यूट्रॉन्स, एंड इन दिस सेकंड केस 210 protons minus 84 neutron, you got 126 neutrons. The next part D, selenium forms a compound that contain only selenium, oxygen and chlorine. But in this question you are given the 3 atoms, that is selenium, that is oxygen, that is chlorine. The compound contain 9.6% oxygen. बच्चे आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है 9.6 by mass and 42.8% क्लोरीन, और बच्चे आपको क्लोरीन का भी परसेंटेज mass गिवन है 42.8. It is given to you. You have to find the empirical formula of this compound. तो बच्चे empirical formula के हमारे पास 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको याद करने हैं. फॉर empirical formula, step 1 is you find the percentage or mass of element. In second step you find moles. In third step you find mole ratio. बच्चे आपको mole ratio find करनी होती है between the atoms, और बच्चे आप फोर्थ स्टेप में फाइंड करते हो आंसर शुड बी इन योर सिंपल होल नंबर्स. आपके आंसर
फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में नहीं आने चाहिए। नाउ स्टेप 1, परसेंटेज बच्चे आपको न्यूमेरिकल में गिवन है इन द डाटा, बट वी शुड नीड परसेंटेज ऑफ सेलेनियम। तो बच्चे आप कैसे फाइंड करते हो? लुक एट दैट, टोटल कंपाउंड कंटेन 100% ऑफ एलिमेंट and out of 3 elements 2 information is given to you. It contain 9.6% oxygen, तो बच्चे आप माइनस करोगे 9.6% एंड माइनस करोगे क्लोरीन का परसेंटेज। नाउ योर आंसर कम्स आउट टू बी 47 पॉइंट, तो आप यहाँ पुट कर दोगे 47.6%। ये बच्चे आपका परसेंटेज निकल आई है फॉर सेलेनियम। इन स्टेप 2 यू आर गोइंग टू फाइंड मोल्स। बच्चा मोल्स कैसे फाइंड करते हो? द फार्मूला फॉर मोल्स इज दैट्स इक्वल टू मास और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बच्चा आप स्टेप 2 में सेलेनियम की परसेंटेज को डिवाइड करोगे उसके एटॉमिक मास पर, दैट्स इक्वल टू 79। सी फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। एटॉमिक मास फॉर ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ये बच्चा आपने डिवाइड किया एटॉमिक मैसेज पे टू फाइंड मोल, या आप आंसर फाइंड करोगे। योर आंसर कम्स आउट टू बी आफ्टर सोल्यूशन 0.602% फॉर सेलेनियम। सेकेंड बच्चा हमारे पास ऑप्शन आएगा 0.6 इज द आंसर फॉर ऑक्सीजन एंड 1.2 आर द मोल्स फॉर क्लोरीन। नाउ इन स्टेप 3 यू आर गोइंग टू फाइंड मोल रेशो। ये बच्चे आप कैसे फाइंड करते हो? आपको डिवाइड करना होता है सारे आंसर्स को बाय स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चे आप इन सारों को डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चे स्टेप 2 के जो आपके आंसर्स हैं 0.06 है, 0.6 है और 0.1.2 है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0.6, तो डिवाइडिंग ऑल द आंसर्स बाय 0.6, द आंसर्स कम्स आउट टू बी 1:1:2. It means this formula contain 1 selenium, 1 oxygen and 2 chlorine. So formula is selenium 1, oxygen 1 and chlorine 2. This is the empirical formula of the given compound. ये बच्चे आपका फाइनल आंसर। A sample of oxygen has a volume of 11.5 dm cube। बच्चे आपका वॉल्यूम गिवन है at room temperature and pressure. The temperature of the sample is decreased, the pressure remain constant. Describe and explain using kinetic particle theory what happened to the volume of the sample. अच्छा आपने फाइंड करना है कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रही है। As we know that temperature directly proportional to volume means जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीमेंट आएगी। It is because by increasing temperature kinetic energy will also increase, volume decreases. It is due to decrease in kinetic energy. By decrease in temperature, kinetic energy means motion of particle decreases. So particles come close to each other. That's why volume decreases. Part 2, the pressure of sample decrease. आपने मुझे pressure decrease किया है. The temperature remain constant. Describe and explain using kinetic particle theory what happened to the volume of the sample. So which is straightforward. We know that volume of a gas is inversely proportional to pressure. आप pressure decrease करोगे, volume should increase because the particles move far away from each other. So we say volume increases. It is because particles move away from each other as distance between the particle increases. Now in third part, calculate mass of oxygen in the 11.5 dm cube sample at room temperature and pressure. Give your answer to two significant figures. Now the volume of given to you, volume of oxygen, that's equal to 11.5 dm cube. तो बच्चे आपको फाइंड करनी है मैथ। तो बच्चे मैथ फाइंड करने के लिए वी शुड नीड द मोल्स। तो बच्चे पहले आप मोल्स फाइंड कर लोगे। तो मोल्स का फार्मूला बच्चे आपको लिखवाया था, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। बच्चे वॉल्यूम आपको गिवन है अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलर वॉल्यूम की बच्चे वैल्यू होती है 24 dm क्यूब। तो ये बच्चे आप पुट कर दो। To find moles for oxygen, that's equal to volume is given to you 11.5, the molar volume is 24 dm cube.
तो बच्चे आपके निकल आएंगे मोल्स फॉर ऑक्सीजन एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.479 moles. Now you find the mass. Again apply the formula mole equal to mass by molar mass. कुछ यहाँ से आप सॉल्व कर लें, मोल्स आपने फाइंड कर लिए, दैट्स इक्वल टू 0.479. बच्चे आपको मैस फाइंड करनी है. O का एटॉमिक मास 16 है एंड देयर आर 2 ऑक्सीजन बिकॉज फार्मूला फॉर ऑक्सीजन इज O2. ये बच्चा मल्टीप्लाई करोगे 32 मल्टीप्लाई विथ 0.479 एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 15 grams. तो ये बच्चा आपका आंसर फॉर mass of oxygen. In this question number 3, there is a concern about the disposal of plastic made from the non-biodegradable polymer, mean the polymer that do not decompose naturally or by microorganisms. The partial structure of non-biodegradable polymer is shown. मतलब आपको एक polymer का structure given है. Part 1, name the type of polymer shown. तो अच्छा एक बार ध्यान में रखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर. एक को आप नाम देते हो एडिशन पॉलीमर एंड द सेकंड वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स and condensation polymers are formed due to the presence of a carboxylic group or alcoholic group or amine group. They are 3 responsible for the condensation polymer. In the given option, look at that, we have carbon carbon single bonds, carbon carbon single bond. It means it is formed by the addition polymers because double bond combine to form single bond in the long chain polymer. Second part, draw the structure of the monomer used to make this polymer. बच्चा आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो बच्चे मोनोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट को सेपरेट करना होता है. इन द गिवन पॉलीमर लुक एट दैट, कार्बन 1 दैट कंटेन हाइड्रोजन दैट कंटेन क्लोरीन, कार्बन 2 दैट कंटेन CH3 दैट कंटेन हाइड्रोजन. इन कार्बन 3 अगेन Cl एंड H इज रिपीटेड. इट मींस आप इसका सेपरेट करोगे रिपीटिंग यूनिट दिस वन, दैट इज वी राइट C सिंगल बॉन्ड C, 1 hydrogen, 1 chlorine, then CH3, then hydrogen, and now this is the repeating unit from the given polymer. आपको कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं, 3 बॉन्ड्स आप यहाँ डबल बॉन्ड प्लेस करोगे. तो दिस इज द मोनोमर ऑफ द गिवन पॉलीमर. थर्ड पार्ट, this polymer is often disposed of by combustion. So just one problem associated with this method of disposal. So we say during combustion they produce some poisonous gases. Poisonous gases are formed. The next part, lactic acid is used to make polylactic acid, a biodegradable polymer. Means that polymer that decompose chemically by microorganisms. The structure of the lactic acid is shown. Suggest what is meaning of term biodegradable. Means the substance that can decompose naturally by microorganisms. Draw the partial structure of polylactic acid. Show at least 2 repeating units. It form condensation polymer due to presence of carboxylic group. तो बच्चे आप सिंपल इसमें लॉस करते हैं वाटर का. अगर आप वाटर का बॉन्ड ओपन करें, वी गॉट H सिंगल बॉन्ड OH. तो बच्चे आपको वन साइड से कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट से OH रिमूव करना होता है और अल्कोहलिक पार्ट से H रिमूव करना है टू फॉर्म H and OH वाटर. Now the part left behind, look at that. First there is oxygen, second carbon, then hydrogen, then CH3, then again single bond carbon and double bond O. तो ये बच्चा आपने इसका H और OH को रिमूव किया. बट देयर आस्क कि आपको 2 रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं. तो ये आपका फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट. Same structure draw again, that is oxygen, then carbon with hydrogen and CH3, then again C double bond O, and the last bond should be open. So this is the partial structure of the polymer with 2 repeating units. Next part, a factory used 500 tons of lactic acid to make polylactic acid. The percentage yield is 100%. But the mass of polylactic acid made
is less than 500 tons. Explain why the mass of polylactic acid made is less than 500. So simple is that it is a condensation polymer, so loss of small molecule take place here. Due to loss of small molecule, here water is lost. तो water के loss होने से the mass is not 100%, so the mass should decrease. Next one, the aqueous lactic acid react with acidified potassium manganate 7. This is your oxidizing agent. ये बच्चे आपने ध्यान में रखनी है बात. It is responsible for oxidation or oxidized other compounds. There is a color change from purple to colorless. It means reaction take place. Suggest what happened to the lactic acid in this reaction. Means lactic acid is oxidized. Lactic acid is oxidized. बच्चे कैसे आपको कंफर्म हुआ? Because color change take place purple to colorless. अगर color change नहीं होता, then we say no reaction take place. Next part. An aqueous lactic acid is neutralized by aqueous sodium hydroxide. Write ionic equation for this reaction. तो अच्छा आपको सिंपल सा कंसेप्ट देखना है. When we write ionic equations for acid based reaction, तो अच्छा lactic acid is an acid. Acid always provide H positive ion. Sodium hydroxide is a base that always provide OH negative ion. These are in aqueous solutions. When they combine, they form neutral water in liquid state. तो ये बच्चा आपकी ionic reaction for any acid base reaction proceed in aqueous medium. Part 6, aqueous lactic acid react with magnesium. Name the gas made in this reaction. So the rule is that whenever any acid react with metal, that forms salt along with hydrogen gas. The name of gas made, that is, the name is hydrogen and formula is H2. The next question is, zinc bromide and zinc carbonate are both ionic compounds. Predict two physical properties other than electrical conductivity of zinc bromide. तो बच्चे आपको दो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करनी है आयनिक कंपाउंड्स की. नंबर वन, ionic compound have strong electrostatic force, so they have high melting and boiling point due to strong electrostatic attraction between their particles. Then second one, that is ionic compounds exist in solid state. We also write they are soluble in water as well. Part B, zinc react with bromine to make zinc bromide. Reaction is given to you. Zinc bromide contains zinc plus 2 and bromide negative ions. Explain in terms of a movement of electron how Zn-Br2 is formed from zinc atom and bromine molecule. तो अच्छा आप चेक करोगे, जिंक पे चार्ज लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे +2 है. ब्रोमीन बच्चे लेफ्ट साइड पे फ्री फॉर्म 0 है और राइट साइड पे -1 है. तो in this reaction zinc is oxidized, means zinc loses electron and bromine gain electron. So Zn-Br2 is formed. Zinc loses 2 electrons and bromine gain 1 electron. We also say zinc loses 2 electron to form, ये बच्चा बनाएगा after losing electron zinc +2 and bromine gain 1 electron to form bromide ion. The next part, aqueous zinc bromide react with the magnesium as shown, which आपको reaction given है. Use equation to explain oxidation take place. तो अच्छा आप चेक करें, zinc +2 से 0 हो रहा है तो zinc में तो रिडक्शन आ रही है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है. जबकि देखिए मैग्नीशियम 0 से +2 चार्ज इंक्रीमेंट, एंड चार्ज इंक्रीमेंट मींस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अच्छे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीशियम की, सो वी से मैग्नीशियम लूज 2 electrons. So its oxidation number increase from 0 to +2. Part second बच्चे part, use the equation to explain that reduction take place. Reduction mean decrease in charge. So look at that, zinc is +2 on the left side and 0 on the right side. It mean it gain 2 electrons. So we say zinc ion gain 2 electron. ये बच्चे हमारे पास answer for part 2. The next part is zinc carbonate is insoluble in water. Zinc carbonate can be prepared by reacting aqueous zinc bromide with carbonate in the precipitation reaction. Name suitable aqueous solutions that can provide carbonate.
इस सेक्शन में बच्चे आपको जिंक कार्बोनेट प्रिपेयर करना है। जिंक कार्बोनेट दैट इज ZnCO3 वी हैव टू प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिंक ब्रोमाइड। बच्चे आपको जिंक ब्रोमाइड को रेड करवाना है विद विच एलिमेंट दैट प्रोड्यूस जिंक कार्बोनेट। तो बच्चे श्योरली वी नीड कार्बोनेट रेडिकल and that carbonate may form a bond with metals like sodium, like potassium. So we write sodium here. So when sodium carbonate react with zinc bromide, you got the result. The answer for the question is that is your sodium carbonate or potassium carbonate. Second part, the sample of zinc carbonate is heated strongly. Name the product form. तो बच्चा आपने concept discuss किया था whenever metal carbonates are heated thermally they produce metal oxides. They produce metal oxide along with carbon dioxide. तो बच्चे मेटल कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन की जनरल इक्वेशन, तो जब आप जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बच्चे मेटल यहाँ पर जिंक है, आपका जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड zinc oxide. The next question is petroleum, the crude oil, provide the raw material for making ethanol and ammonia. Part A, describe how petroleum is separated to make fractions such as naphtha and petrol or gasoline. अगर हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की बात करते हैं तो बच्चा आपको पहले क्रूड ऑयल को हीट करना होता है दैट कंटेन अ लॉट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो स्टेप बच्चे 1 हमारे पास हीट क्रूड ऑयल। आप जैसे इसको हीट करोगे द फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट इज इनको आपको सेपरेट करना होता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट द फ्रैक्शंस आर separated by fractional distillation. And then in part 3 we may write as fractions are separated due to different boiling point. Part B, compounds such as C11H24 is the naphtha fraction are cracked to make hydrogen, alkene and small alkane. Explain how the molecular formula C11H24 shows the compound is alkane. तो बच्चा अल्केन का जनरल फार्मूला पढ़ के आए थे CnH2n+2। नाउ इन दिस गिवन एग्जांपल कार्बन आर 11। तो बच्चा अगर आप n को 11 पुट करते हो देन यू गॉट C11H11 into 2 + 2। तो बच्चा सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा C11H22 + 2 24। इट इज कंफर्म दैट अल्केन हैविंग फार्मूला CnH2n+2. Part 2, construct an equation to show the cracking of C11H24 to make ethene and an alkane only. बच्चे आपको ethene प्रिपेयर करनी है और alkane, and we know that for the concept of cracking there are two options of cracking that we discussed. जब आप alkanes को decompose करते हो तो बच्चे alkane को decompose करने से cracking से we have two option. Option 1, you got small alkanes along with alkenes, along with small alkenes. आपके small बच्चे alkanes बनते हैं, small alkene बनते हैं. Second option is you got small alkenes along with hydrogen gas. So here they are asked to make alkene and alkane, it means there should be no H2 gas. Now we write C11H24. they are asked it produce ethene. तो बच्चे alkenes का फार्मूला है CnH2n for alkenes and for alkane फार्मूला is CnH2n+2. अगर आप n को 2 पुट करते हो for ethene because they are asked you have to prepare ethene, तो बच्चे आप n को 2 पुट करें we got C2H2 into 2 4. then how many carbon left? टोटल बच्चा आपके 11 कार्बन है, आप इसमें से 2 माइनस करें यू गॉट 9. तो आपको यहाँ पुट पढ़ना पड़ेगा n = 9 बिकॉज यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन. तो बच्चे कार्बन को 9 पुट करें C9 एंड H 9 into 2 18, 18 + 2 20. तो ये बच्चे आपका 1 alkene mean ethene is formed and other ethane is formed. This is your answer. The next part is part C. Describe how hydrogen is converted into ammonia in the Haber process.
इंक्लूडिंग द कंडीशंस यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस। तो बच्चे आप पढ़ के आए थे हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट कंबाइन रिवर्सिबली टू गिव्स अमोनिया। अगर आप इसको बैलेंस कर लें, वी हैव 2 नाइट्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड, तो मैंने राइट साइड पे 2 प्लेस किया, एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन्स, एंड वी नो दैट we use iron as a catalyst in these reactions. We need temperature of 400 to 500 degrees centigrade, and we have to maintain pressure that is 200 to 400 atm atmospheric pressure. तो बच्चे आपको इस आंसर में you need first one nitrogen to prepare ammonia when reacting with hydrogen, then we need the catalyst iron, then condition required that is temperature should maintain around 400 to 500 degrees centigrade, and pressure should maintain around 200 to 400 atmospheric pressure. State one other use of hydrogen. So we have a lot of use of hydrogen, that is for making fuel cells. It's very important use fuel cells in order to make margarine or vegetable ghee, which is आप बनाते हो margarine as well. We know that when oil or unsaturated organic compound are hydrogenated, they form margarine और घी। तो ये बच्चे आपके ध्यान में होना चाहिए from the organic chemistry. Part E, ethene react with compound to make ethanol. Name the compound. बच्चे whenever ethene को आप रेड करवाते हो स्टीम के साथ वाटर इन गैसियस स्टेट, वी नो दिस रिएक्शन दैट प्रोड्यूस एथानॉल। अल्कोहल बनती है, अल्कोहल इज एथानॉल, यू नीड स्टीम हेयर। ये बच्चे आपका रेगुलर क्वेश्चन है, व्हेन स्टीम इज एडेड इन इथीन योर आंसर इज अल्कोहल। स्टेट वन कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, वी नो दैट वी नीड फास्फोरिक एसिड फॉर दिस रिएक्शन, वी हैव टू हीट द रिएक्शन एज वेल। तो आपके दोनों कंडीशंस हैं। Here you write the catalyst, that is phosphoric acid. We use the catalyst, and also we need heat for the reaction to proceed. Question number 1 to 5 for May June 2021.